Hello and welcome. Today I'll have the founder of Mahnush, a non-profit organization that believes in empowering the forgotten transgender community of Pakistan by not only providing a safe place, but also enabling them with a skill, from the streets to a business of handcrafted home accessories. I recently bought a beautiful charpai platter, and I highly recommend you all to visit Mahnush on Instagram and Facebook. Welcome, Ayesha, and welcome, Maha. It is wonderful to have you both on Lounge with Fatima. Before we begin, I want to ask what probably many have been wondering. What does Manush mean? Well, Manush doesn't really mean anything, but it's an amalgamation of all of the transgenders that we've come across in the past and who've really touched us and the reason why we began Manush in the first place. So it's just an amalgamation of names, and naturally my name is Maha as well. So we just coined it that way. It makes so much sense. I mean, and how beautifully put together. It's a very close-knit community, especially when it comes to Pakistan and the culture that we belong. And for very obvious reasons also. So what is challenging to convince them to start off fresh, learn a skill, and then stand on their feet? You know, उनका एक गुरु होता है, as per my understanding. तो क्या वो challenges थे जो आपको convince करने में लगा कि let's get out of your, shell and let's begin something? It's been very challenging and very difficult because naturally, as most of them are disowned from their own families at a very young age, they fall into the hands of all of these gurus and eventually into illicit activities. They need to earn from that, provide to the guru, because gurus then start playing the role of their parents naturally because they're nurturing them, bringing them up. So they have to answer back to them, provide the money to them. So however they do it, basically. However they earn money, yeah. Yeah, exactly. So as time passes, begging on the streets, doing all of these dances, even prostitution becomes a rite of passage for them. Yeah. To convince them to come into this work is very difficult because whatever they'd be earning here working with us, they're earning far more on the streets. So to identify कि कौन सा transgender is actually willing, actually wants to improve their life, and then naturally we have to talk to them, explain the process कि नहीं, ये एक इज्जत की रोजगार है. This would bring you respect. It would make people respect you first and foremost, and get you out of that vicious cycle that you are in where it's just guru and chela. So it is very challenging. You're very young yourself, Maha. Do you recall the first ever transgender that you approached or somebody introduced you to them? How did it begin? I mean, do you remember the first time? Oh, yes. Oh, definitely. And I think she would explain that encounter much better. It's a very interesting story. About 7 years back, my husband lost his job, and I do business, and I completely lost my business. I had to shut down my office. So my children were not even going to school. So we were passing through a very rough time. So what I was doing is, as she started O levels, so I used to take her to different tuitions, and I used to sit outside till the time she comes back because I could not afford the fuel to commute back and forth. So there was a very rainy day, and I was sitting outside, and there was a transgender passed by. And as she was passing by, I just stopped her, and I asked her, "Please, मेरे लिए दुआ करो." And she had to get some gosht कहीं से लेना था उसको सदके का. तो मेरी बातों की वजह से, because I was dragging her so long, कि वो उसका गोश्त रह गया. She came back and she said, आपकी वजह से तो मुझे गोश्त भी नहीं मिला, तो तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसको बताया कि my husband doesn't have a job, he was doing such a good job, and my children are not going to school, and I have lost all my business, and I don't know where life is taking me. तो उसने मुझे दो सवाल पूछे. उसने कहा, you are married, you have children, मेरी तरफ देखो, ना मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, ना बच्चा गोद ले सकती हूँ, ना मेरी जिंदगी का कोई पार्टनर है, ना मैं ये सोच सकती हूँ मेरा पार्टनर होगा. अगर तुम्हें आज तलाक हो जाए, तुम बेवा हो जाओ, you can still think to remarry. You have options
the whole world is open to you. What are you crying for? And honestly, it hit me very hard. Though I kept crying, and she kept explaining me this again and again. Her name is Sana. I would like to quote her name, though she is not part of Manush, because मुझे बहुत यकीन है कि वो अपनी ही तौर की एक अल्लाह की देन थी उसको. वो अपने तौर पे कभी आ जाती और कभी चली जाती. एंड देन इट बिकेम अ रिचुअल कि मैं जब वहां पर लेके जाती थी तो मैं उसके लिए कुछ, आई कुड ओनली अफोर्ड जो मेरे घर में पका होता था, मैं उसके लिए खाने को ले जाती थी. Or sometimes she would say, I like to eat karelas, and I will tell my house help to get something better for her. तो ऐसे होता रहा. उसको हेपेटाइटिस सी था ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट शी वेंट थ्रू. और उसने बताया भी कि मुझे है, लेकिन nobody took care of her and it aggravated and she was in a very bad state. तो मुझे मैं खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पर कि मैं उसको सारा उसका ट्रीटमेंट करा सकती, बट आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स एंड आई हेल्प हर थ्रू. She gave me a lot of positivity. She could not even go to a shop. फिर महा के साथ उसका इंटरेक्शन शुरू हुआ कि कभी उसको सिगरेट लेने होते थे तो वो दुकान पे नहीं जाती थी कि लोग उसको अंदर नहीं आने देते थे. तो she took Maha inside with great pride कि I can buy these cigarettes. And Maha came up with this idea कि हम इनको इतना पढ़ा तो दें कि ये अपने लिए सिगरेट, पानी और इतनी इनमें एबिलिटी हो कि अपनी बात को, अस्पताल जा रहे हैं तो बता सकें क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. They know their rights. They know their rights. हाँ. और उस वक्त तक हमें भी नहीं पता था कि क्या लेजिस्लेशन है. It was way back 7 years back, काफी पुरानी बात. It continued. And 2017 में हमारी भी लाइफ थोड़ी प्रोग्रेस हो गई. और in the meantime महा इनको पढ़ाती रही. And 2017 इसको ये ख्याल आया, she was going to university and she just thought that probably we skill them, and it was a very good idea. And she herself is a lawyer now, but she's good at painting and all that, and she thought that probably she can do that. तो इनमें से एक चांदनी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी. सना हमारे साथ कभी कभी आ जाती थी, कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही. लेकिन सना के बारे में मैं बहुत इस तरह कह सकती हूँ कि उसको कोई अल्लाह की देन है. जैसे लोग कलंदरी होते हैं, आते हैं और कुछ बातें करके जाते हैं, उनका एक अपना कनेक्ट, उसका एक अपना, वो ऐसी ऐसी बातें मुझे बता जाती थी जो जो मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि उसको कहाँ से पता लगती है. और वंस शी वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी तो उसको इतना शौक था कि ये बाहर चली जाए, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग अ वेरी गुड फाइनेंशियल सेटअप एट दैट टाइम. तो उसने शी सोल्ड वन ऑफ द इयररिंग्स शी हैड, जो कि उसकी पूरी जिंदगी का असासा था, और उसने कहीं एक मज़ार पे लेके गई और वहां पे उसकी खैरात कर दी कि माहा तो जाएगी. एंड माहा एक्चुअली वेंट बिकॉज माहा को स्कॉलरशिप मिल गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइफ बिकेम ईजियर फॉर अस. और अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन लाना शुरू कर दिया. और फिर माहा ने ये इनको पेंटिंग सिखानी शुरू की. अब ये लॉग पे जब पेंटिंग करते थे तो कोई भी इतना बड़ा महा के समेत अच्छा आर्टिस्ट नहीं था कि बहुत अच्छी आ जाए. उनको मीडियम को केटर करना अच्छा नहीं आता था. दे केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस एंड इट डिडंट टर्न आउट दैट वेल. बहरहाल वो इनको पढ़ाती भी रही और ये सारा सिलसिला चलता रहा. इवेंचुअली एक दिन इनको ख्याल आया कि अगर इसको डिजिटली हम प्रिंट कर लें या हम कोई इनकी इंक्रिप्शन कर लें तो क्या होगा. और हमने कुछ ऐसे करके माहा ने अपने उन सबके चांदनी, सपना और अरूज थी, उनके साथ मिलके एक वैरायटी ऑफ, एक तोती भी हमारे पास है, तो इन्होंने मिलके कुछ ट्रेस, कुछ लॉग्स पे शीशे लगा दिए, कुछ उल्टा पुल्टा दरख्त को कोई बना दिया कि वो मेज है या टेबल है या कुछ ऐसे हैं. एंड बिल्कुल. और हमें एक एम्बेसी हेल्प आउट करी थी कि वहाँ एग्जीबिशन होगी. फिर पता लगा कि एम्बेसी सपोर्ट नहीं कर सकती. तो विद ऑल कॉन्फिडेंस शी रियली गियर्ड अप एंड शी वेंट टू सरीना. आई विल गो एंड चेक विद देम कि हमें जगह देंगे कि नहीं. एंड सरीना हैज बीन वेरी काइंड. उन्होंने हमें माहा को पहली दफा जाने के 1.5 दिन में रिस्पॉन्स दिया कि विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस फॉर 2 days. And Allah was so kind. I would say it was her hard work. She was all sold out on the first day. She was taking orders. And it was not only her hard work. Of course, she composed the ideas and everything. And every one of them, Chandni, Toti, Sapna, Aruj, they all worked very, very hard. और फिर उनको एक अल्लाह ने बहुत अच्छी वो हाइप भी दी कि बहुत ज्यादा मीडिया आ गया, and they were in front of cameras and of course I was all cherished being a mother that my daughter was behind all this and she was able to support. और एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जब
हम जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो हमें दूसरे की तकलीफ बहुत बड़ी लगती है। पहले हम इनको गुजरते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ये मास्क करके, अभी मैं बहुत ज्यादा लोगों से सुनती हूँ कि कुछ ख्वाजा सरा सही भी नहीं होते और मास्क कर लेते हैं। आप सोचें कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के मांगना कितना तकलीफ दे है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे जाके पूछो उसका दर्द क्या है। मैं ऐसे बड़े घर में रहती थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे नहीं जा। आई इवन हैड अ हाउस हेल्प एट माय प्लेस। I had a wajbi izzat to maintain, but I was going through something which was beyond my understanding, जो कि मेरी सोच से भी बाहर था और जो मुझसे हैंडल भी नहीं हो रहा था। तो ये मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी, ये जज करने वाला काम ना हम अल्लाह पे छोड़ दें और ही इज द बेस्ट। लेट्स बी अकाउंटेबल ओनली इन फ्रंट ऑफ हिम। तो हम लोगों को जज करना छोड़ दें, क्योंकि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के भी बहुत गरीब हो सकते हैं और बहुत गरीब होके भी बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। सो लेट्स कीप दिस टू। सो ओवर टू Maha. Gee, Maha, so that was the beginning of you reaching out, and wow, amazing. You know, unlike the West, not a very long time ago, the trans community has been given a grant for protection by the government of Pakistan. Do you feel this is a new beginning and a new chapter? I definitely believe that this is a new beginning and it's a new chapter. But then again, all of these rights are being provided to all of our transgender community within Pakistan, but they're not even aware. Most of them, उनको पता भी नहीं है कि उनके क्या rights हैं. उनको कोई दुकान में आने से मना कर देता है तो they believe कि अच्छा, maybe we're not allowed. Maybe this is just how society is. And even if the government say they started providing them with spots in universities, तो उनके जो गुरुज हैं वो उनको नहीं आने देते पढ़ने के लिए, बिकॉज नेचुरली उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज देयर वे ऑफ इनकम. So even if there are rights, even if the government is helping them, people want to help them out, it is very difficult to help them because some may not want to help themselves, and with others their gurus are not helping them or making life better for them. कभी ऐसा हुआ है कि somebody who has become a part of what you're doing, this organization, and suddenly they disappear, and because they have This has happened multiple times. Initially, because we didn't really realize, we obviously were experimenting, we didn't understand the dynamics of the Guru Chela system. Many would come and many would go in fear of their gurus as well. I think even Chandni had to run in the beginning. Many would change their phone numbers because again उनके gurus उनको harass करते थे कि तुम ये काम तो नहीं शुरू कर सकते. या तो उनको थाने बिठवा देंगे काफी दिन के, you know, to make them understand कि you either work for us or this is what's going to happen to you. So many had to disappear as well. It's very challenging to convince them to stay with us and to work, because even if some want to, they can't because of their circumstances. And of course, जो पहली खुशी इनको मिली होगी अपनी रोजी कमा के, and जो पहले रोजी कमाते थे उससे तो बहुत मुख्तलिफ. And of course, slowly, gradually, हर चीज का एक स्टेप है, एक प्रोसेस है. But you know, it has started, and I don't think there is any going back. इसके साथ साथ, are there any other projects that you're working on besides just this? We did think of a couple new projects, but the most recent one is that we are starting a catering line. So we've hired a chef, and the chef is training all of the transgender employees that we have currently. And eventually, we will start a small menu where people can order from us, and it'll all be cooked by our transgenders, which I thought was very different in a country like Pakistan, because they're deemed as the untouchables. People don't even want to talk to them or speak to them. So I thought that maybe the literate percentage of our society might have a different reaction to this. So this is the newest project. No, we have to acknowledge that people have been very, very supportive. Some have been, yes, definitely. Even the overseas Pakistani, they've been reaching us out on this. They've been very, very supportive. And I guess we need to have some social reforms, and of course, also in terms of legislation, it has to be taken very seriously. Because if we don't accept them socially, because उनका एक social norm बन जाता है ना कि सड़क पे चार लोग मांग रहे हैं, अगर हम नहीं मांग रहे तो हमारा lifestyle उतना ही uplift हो.
और उनको इस तरह सड़क पे छोड़ना भी तो जायज नहीं है ना, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन एज के उसके बाद वो वैसे भी नहीं मांग सकते। एंड पाकिस्तान इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट के उनको वैसे उनकी हेल्थ कंडीशंस के ख्याल रखा जा सके। कोरोना वाज द वर्स्ट टाइम दे वर गोइंग थ्रू, और जो काम कर रहे थे उनके लिए बेनिफिशियल हो गया, एटलीस्ट दे वर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। बट एट द एंड ऑफ द डे ये गुरु चेला सिस्टम को जब तक हम इसमें कोई सोशल नॉर्म्स या सोशल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स कि वो हमसे जैसे हमारे जेंडर या हमारा क्लास सिस्टम आ जाता है, हम डिफरेंटली सोचते हैं, तो उनका भी एक सोशल सेटअप बन जाता है। उस सोशल पैकेज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी एक अपनी सेटिंग है। और अगर हम मैंने बहुत लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए देखा कि वो मेकअप क्यों करते हैं, तो हमारी बेटियां भी तो मेकअप करती हैं, हमारे बच्चे भी तो मेकअप करते हैं, हमारे बच्चे भी शादियों पे डांस करते हैं, हम बड़ा खुश होकर देखते हैं कि वाह फलाने गाने पे इन्होंने डांस किया है। अगर वो डांस होके खुश रहते हैं, जिनका जिंदगी में पार्टनर भी नहीं है, जिन्होंने शादी भी नहीं करनी, जो इस मुल्क में सोच भी नहीं सकते पार्टनरशिप के बारे में, जिनके बच्चे भी नहीं अडॉप्शन करना, एक पढ़ी लिखी मैं ट्रांस को जानती हूँ जो कि अडॉप्शन करना चाहती है, बट वो इतना मुश्किल प्रोसेस है उससे गुजरना। तो हमें उनको उस सोशल सेटिंग में उसको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें रिफॉर्म उसी में लाना है कि उनकी सोच बदले, टू अर्न। हम अगर मेकअप करते हैं तो हम खूबसूरत हैं, अगर वो हमसे थोड़े डिफरेंट हैं या सोशली थोड़े से नीची क्लास से हैं तो वो बहुत बुरा है। We need to come to a resolve on this actually. बिल्कुल, and reform ourselves as well. बिल्कुल, the mindset, I think it all starts with the mindset. It starts with the thinking, and I really hope this is not just the beginning. I'm hoping and praying for this. Take it forward for as long as we can. Thank you so much. I mean, this was absolutely wonderful. I'm so honored to be both, and this is a topic that it's about time we need to eliminate and start talking about it, because they are human, and they are a part of the society, and we need to take them forward socially, culturally, in every way possible. Thank you so much for your time. Thank you so much. Get well soon, Ayesha. Take care. Thank you. You too. Bye bye. Bye bye.